Now see page number 21. Some paragraph was left. So this also have the background increase in oil prices due to elevation of Kuwait by Iran. देखिए ऑयल प्राइस जो है वो कम हो रहा है, उसका प्राइस जो है बढ़ गया बिकॉज ईरान और कुवैत ने ईरान ने कुवैत पे हमला किया. इसकी वजह से प्राइसेस जो है ऑयल के वो बढ़ गए. एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पे द लोन बाय फॉर इंडिया. इवन द नॉन रेसिडेंट मीन्स एनआरआई जो है इंडिया के जो एनआरआई है उन्होंने भी इंडिया के फंड से पैसे निकालने लगे. द रेमेडी, नाउ सी द रेमेडी. PV Narasimha Rao appointed Dr. Manmohan Singh as finance minister in order to find a way out of this situation. इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, क्राइसिस से बाहर आने के लिए PV नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया. डॉक्टर सिंह मीन्स PV नरसिम्हा दैट इज़ मनमोहन सिंह अंडरटुक मेनी करेक्टिव मेजर. उन्होंने बहुत सारा मेजर्स लिए, इफेक्टिव मेजर्स लिए. दिस सिचुएशन बिगेन टू स्लोली वो चेंज हुआ. क्राइसिस जो है चेंज होना स्टार्ट हुआ. ही रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रेस्ट्रिक्शन था, जो लॉ बना था, वो रिमूव कर दिया. ही रेस्ट्रिक्टेड द लाइसेंस सिस्टम टू 18 कंट्री. पहले बहुत सारे इंडस्ट्री पे लाइसेंस था. फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रेस्ट्रिक्शन फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत सारा था पहले. उन्होंने वो कम करके सिर्फ 18 इंडस्ट्री तक ही रखा. In view of the increasing loss in the public sector industry. So in view of the increasing losses in the public sector, that is government industries में loss जो है वो means in view of the increasing losses in public sector industry, loss हो रहा था public government sector में, जो losses हो उसको कवर करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये ओपन अप द पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर पहले ज़्यादा थे, अभी उन्होंने पब्लिक सेक्टर ज़्यादा ओपन किया. Government sector, this government sector that is for investment by private sector. So in this public sector, who will invest in this public sector? Private industry will invest, and in this way public sector economy will improve. And this economic sector, if the economic sector is improved, this will help the common people. This will help for the welfare of the common people. सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द शेयर मार्केट अंडर कंट्रोल. शेयर मार्केट जो प्राइस बढ़ रहे थे दिन ब दिन, जो प्रॉब्लम बढ़ रहे थे, सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द शेयर मार्केट अंडर कंट्रोल में लाने के लिए ही मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मनमोहन सिंह. ही स्टैब्लिश सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, उन्होंने स्टैब्लिश किया ताकि शेयर मार्केट अच्छे से चल सके. 1992 में उसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मीन्स पहले हाथ से होते थे, अभी उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया. ही गेव प्रायोरिटी टू रिमूव द स्पेक्टर ऑफ रेसेशन. जो लॉसेस हो रहे थे, डिक्लाइन जो इकोनॉमी में, वट एवर लॉसेस टेक प्लेस इन इकोनॉमिक सिस्टम, सो फॉर दैट ही गिवन हिज फर्स्ट प्रायोरिटी टू रिमूव ऑल दिस डिक्लाइन इन इकोनॉमिक सिस्टम. Then foreign investment in India grew during the first tenure of Manmohan Singh as finance minister. So foreign investment in India grew means foreign investment started improving. It grown during the first tenure means when the Dr. Manmohan Singh was appointed as finance minister by that is Narasimha Rao. India took recover the gold mortgage with the Bank of England. So India is able to recover the gold mortgage with the Bank of England. इंग्लैंड के बाद जो गोल्ड गिरवी रखा है वो रिकवर किया, उन्होंने ले लिया वापस. द गवर्नमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ द कैपिटल क्लास एज वेल एज द मिडिल क्लास. गवर्नमेंट गॉट द सपोर्ट बोथ फ्रॉम कैपिटलिस्ट क्लास, दैट इज इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, and also from middle class people. As the government opened up the telecom sector, so after slowly government started establishing telecom sector, mobile phones services started all over the country, so that the common people get benefit.
Dr. Manmohan Singh signed the agreement with the world. So Dr. Manmohan Singh also signed the agreement with WTO, World Trade Organization. And World Trade Organization, the international organization, in which India also participated as a India also one of the member of WTO, and launched the policy of privatization, liberalization, and globalization. So for this, no, WTO has been a launch by India, and that is with the help of Dr. Manmohan Singh. Launched the policy of privatization, liberalization, free trade must be there, globalization must be there. Everybody must get chance to invest. There should not be restriction. WTO. In 1995, India became a member of the World WTO. Means India became the member of, India participated and finally become the permanent member of WTO. That is in the year 1995. The see, the organization had the following objective: why WTO has been established and why India become the member of WTO. What is the main objective uh, of this organization, that is WTO? To free trade between country, input to and all the discriminatory law. So whatever law should be there, restriction should not be there. Free trade market should be there for all country. Every country must get participate, must get chance. There should not be any restriction, there should not be any laws or policies. Then and that are hurdle in the way of international trade. Okay, so whatever issues, whatever laws, policy, law restriction should be removed fully. There should be open market, there should be fully globalized world. And so international trade policy must be start. International trade means the trade between two countries, that is from one in between two countries, that is from one country to another country. And to regulate global trade with the help of formal multi-party mechanisms. Everybody must participate, everybody must interconnect with all country. Then General Agreement Tariff and Trade GATT existed at international level before the WTO. So जनरल एग्रीमेंट गेट स्टार्ट हुआ था, एग्जिस्ट हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे, ओके, WTO के पहले. इट रेगुलेटेड कॉमर्स. सो गेट का क्या ऑब्जेक्टिव था? दैट इज़ टू रेगुलेट, दैट इज़ टू गिव इम्पोर्टेंस, दैट इज़ फॉर कॉमर्स, दैट इज़ बाइंग सेलिंग, ओके, जो सेलिंग है, ट्रेड है, वो ज़्यादा बढ़े. गेट का ये मेन ऑब्जेक्टिव था. In India there were opposed extreme view about the WTO. Okay, so at the starting, in the initial state, India was again against to WTO, and after that India became the member of WTO after understanding its main objective. Yet India decided to take its membership. India finally decided, yes, we will also become the member of WTO. That's why one country depends on other country for international trade, because none of the country is self-sufficient. Every country depends on each other. So India also become the permanent membership of WTO. Yet India decided to take its membership. The provision of WTO are regarding grant, import, export, foreign investment, agriculture should be there. Import, export should be start between the at international level. Agriculture should be increased, technology, service. For all these things, no, one country have to depend on the other country. For this, no, open trade must be there, international trade must be there. The sector of electricity, water, transportation, education, and health rapidly commercialized since India became a member of WTO. So when India became the member of WTO, after that, no, it gave an important on that is electricity, water, transportation, education, health. So all they should be improved, all they should be developed.
As per the various report of the WTO, India have made a considerable improvement in areas like, so WTO का WTO में इंडिया मेंबर बन गया. सो आफ्टर दैट नो इंडिया मेड अ कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट. क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाया अलग अलग सेक्टर्स में, लाइक रिडक्शन इन बिलो पॉवर्टी लाइन. जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो गरीब लोग हैं उनका हेल्प किया. BPL इन शॉर्ट BPL, जो गरीब है लोग उनको हेल्प किया. Population decline in infant mortality rate, availability of facility regarding drinking water facility improve किया उन्होंने, काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया. वेस्ट वाटर मैनेजमेंट स्कीम भी लाया. इंडिया साइन द साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. सो स्पाथा ये भी एक ये है अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ये भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही है. इंडिया रिमूव द इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन. जो इम्पोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन था, लॉ जो बना था, इंडिया ने फुल्ली रिमूव कर दिया. ऑन वेरियस कम्युनिटी ओके फॉर सार्क कंट्री के लिए रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया बहुत सारे ट्रांसैक्शन के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए. इंडिया ऑल्सो गेव डिस्काउंट इन इम्पोर्ट ड्यूटी. डिस्काउंट देने लगे इंडिया को भी डिस्काउंट मिलने लगा दूसरे कंट्री से. इंडिया ओपन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन, इंडिया ने इंश्योरेंस सेक्टर भी ओपन किया, that is to private sector, and also started investing in foreign and also foreign investment. In this way in this way we have learned about the journey of India's economy. So in this lesson we have learned about the journey of India's economy. We both have learned that is losses and how these losses has been recovered by the government. We have come a long way from mixed economy to see earlier we used mixed economy, that is both private sector and public sector, and after that this sector change towards globalization. Globalized, fully country become globalized, world become globalized, where free market was started for every country. In the next chapter we are going to study about India's progress in other field. So we are in next chapter we will learn about India's progress in other field. इंडिया ने कैसे प्रोग्रेस किया दूसरे फील्ड में. एग्जाम्पल यू कैन टेक, यहाँ पे इकनॉमी पढ़ा. सो अदर फील्ड मीन्स एजुकेशन में इंडिया ने इम्प्रूवमेंट कैसे किया, वुमेंस एम्पावरमेंट इंडिया ने इम्प्रूव किया. सो इन कमिंग लेसन वी विल लर्न अबाउट दिस.